गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 एट Maldives। तो आज हम वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। कल हम नहीं कर पाए। हमारा दिन शुरू हो रहा है फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के साथ। यस एंड इसके लिए मैं काफ़ी क्या बताऊँ, मैंने बहुत देखा यूट्यूब में, फ़ोटोज़ में, वीडियोस में, इंस्टाग्राम में एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा करने का मन था। कल वी ऑर्डर फॉर इट बट दिन कल नहीं हुआ। सो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के लिए आपको अपने बटलर को एक दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है कि यू नीड द फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट अ डे बिफोर सो दैट यू गेट द ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट डे। सो हमने कल ऑर्डर किया था और आज हमारा फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट आ रहा है। और वी हैव टुडे प्लान फॉर स्नॉर्कलिंग, कयाकिंग, या दैट्स ऑल। और थोड़ा बहुत साइकिलिंग भी करेंगे। 1 घंटे में ब्रेकफास्ट आ रहा है। उसके पहले आई विल गेट रेडी फॉर अ डे। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है बट नो वरीज, दिस इज़ मालदीव्स। धूप है जो भी है सब कुछ सहन कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। Starting with some fruit, guys, this is the best experience in my life so far. I could say one of the best days in my life. OMG, floating breakfast. I always see this on Instagram, on YouTube, everywhere, and I always wanted to do this. Finally, I have my own floating breakfast with the view. अभी वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं हम लोग। फाइनली विल डू वाटर स्पोर्ट्स, kayaking एंड स्नॉर्कलिंग, मे बी जेट स्की एज वेल। लेट्स सी। यह काफ़ी तेज़ धूप है, कल भी था लेकिन कल ठीक था, आज काफ़ी तेज़ है। बट नाउ वी आर इन बिटवीन दिस ग्रीनरी तो इतना फील नहीं हो रहा है। लेकिन राइट एट द बीच बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट में मज़ा तो आया लेकिन थोड़ा बहुत तकलीफ भी है। मैं वापस रूम जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना लेंस के बॉक्सेस लाना भूल गई और विदाउट रिमूविंग द लेंस मैं वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बाय एनी चांस मैं गिर गई तो आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी गर्मी तो काफ़ी है मालदीव्स में एंड समवन टोल्ड मी दैट कि ऐसा ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। इट्स लाइक नो हॉटर देन दिस और नो कूलर देन दिस। मालदीव्स इज़ लाइक दिस ऑलवेज, बट फ़र्क नहीं पड़ता है इतना यार, दिस इज़ मालदीव्स, है ना। सो यू कैन टॉलरेट दिस गर्मी। फर्स्ट टाइम आई नो स्विमिंग, यू गाइज नो दैट, बट डर भी लगता है थोड़ा बहुत, कभी किया नहीं है। ओह माय गॉड, बहुत सारे पत्थर है यहाँ पे। There are many stones here, right? Yeah. Yeah. यहाँ सारे कलर्स ज़्यादा ही ब्राइट है। द ग्रीन इज़ मोर ग्रीन, द ब्लू इज़ मोर ब्लू, द पिंक इज़ मोर पिंक। You don't need any filter in this place. The place itself is a filter.
वी आर डन विद कयाक एंड इट वाज ग्रेट. अच्छा लगा लेकिन काफ़ी टायरिंग, क्योंकि यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू डू एंड शायद मुझ में इतना स्ट्रेंथ है नहीं. मेरे आर्म्स अभी पेन कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ क्वाइट हैवी, बट इट वॉज फन. या इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस. अच्छा लगा. And one more thing, yes, it is kayak. On my previous clips I was saying kayak. मुझे अभी मालूम पड़ा it is kayak. Okay, so now we are going for snorkeling. We have all the equipments with us and we also got a GoPro and what else, सब कुछ है जो भी equipments चाहिए अभी snorkeling के लिए. So the snorkeling is for 45 minutes and चलो let's go. This is where we are going to do snorkeling. इतना सुंदर है, मैं क्या बताऊँ. इट्स लाइक द ब्लू कलर इज सो ब्यूटीफुल एंड दो सी एनिमल्स इनसाइड, फिश सो कलरफुल फिशेस कितने सारे हैं, प्यारे प्यारे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, क्यूट क्यूट, बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं. चीयर्स. नॉट कॉकटेल ऑब्वियसली, मॉकटेल. वेटिंग फॉर द लंच. ऑर्डर सम पास्ता, पिज्ज़ा, रिसोटो. इंडियन नहीं है अभी लंच के लिए. आई एम कम्प्लीटली टैन गाइज, लाइक यू कैन सी दिस. लाइक देखो यार मैं कितना गंदा वाला टैन हो गई हूँ. आई थिंक मैं लाइफ में कभी ऐसा टैन नहीं हुई हूँ. SPF लगाया, सब कुछ लगाया, कुछ भी काम नहीं आता है, कुछ भी नहीं. बट यहाँ दैट्स ओके. आई एम नॉट वरीड अबाउट द टैन. दिस टैन इज़ वर्थ इट, टोटली वर्थ इट. 1.5 day बाकी है. घर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है. वांट टू स्टे हियर फॉरएवर. We just woke up from a power nap and now we are going for dolphin safari. We are in this ferry and I think this will take us 45 minutes. The whole task is for 45 minutes, right? Yeah, 45 minutes. देखेंगे dolphins देखेंगे and बोला गया है कि dolphins throughout the year रहता है, लेकिन this is the high time जहाँ पे like there is very high chances of seeing dolphins. Yes, excited again. Vipasha is always excited. So yeah, let's see how many dolphins we can see today. डॉल्फिन नहीं दिखा हमें. सो द गाइड ही सेड कि दिस इज़ अ हाई टाइम टू सी डॉल्फिन, बट देन अगेन डॉल्फिन्स डू माइग्रेट. तो नसीब ख़राब था हमारा. बट इट वॉज अ ग्रेट सनसेट राइड, सनसेट सेलिंग. सो काफ़ी अच्छा लगा. लेकिन डॉल्फिन्स नहीं दिखे. दैट्स ओके, कोई बात नहीं. So we are about to have our dinner and I'm having this mutton biryani. मटन नहीं खा रही हूँ, बस मटन निकाल के बिरयानी खा रही हूँ because I can't eat mutton. And काफ़ी ठंडा ठंडा ब्रीज आ रहा है आज. मस्त मज़ा आ रहा है. Like it's very cold, very windy. Not cold, it's very windy, very breezy. अच्छा लग रहा है. I love feeling the wind. मैं बहुत philosophical हो जाती हूँ deep inside my heart. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. I'll see you guys on the next day on day 3.